Understanding of laws. So, good morning, students. Only Prithviraj Thavri, sorry. Yes. Good morning, students. Yes, Shushri Asule, are you able to listen my voice? Are you able to listen my voice, beta? Good morning. Am I audible? Am I audible? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? Okay, है ना? So, dear students, we have our last live class on 7th of November. ठीक है? 7 तारीख को हमारा लास्ट लाइव क्लास हुआ था, and then after we had a Deepavali vacation. Just after Deepavali break, we had the examination, and during the examination, the live classes were not there because of the reason purpose. And before the examinations over, I got tested positive with corona. ठीक है? So मुझे कोरोना पॉजिटिव निकल गया था, due to which I am supposed to be in a 14 days quarantine, है ना? कोरोना पॉजिटिव होने के कारण 14 दिन फिर से मुझे क्वारंटाइन में जाना पड़ा. Because of that, after your examination from 1st up to 12th, okay, again I was not able to take your classes. ठीक है? So एग्जामिनेशन के बाद में भी इस कारण से मैं क्लास नहीं ले पाया, है ना? क्योंकि क्लास लेने के लिए I need to come to school, but because of being a corona positive patient, I was supposed to be in 14 days quarantine. ठीक? So जो 14 दिन का मेरा क्वारंटाइन पीरियड रहा, देन आफ्टर द टेस्ट वगैरह. तो ये कुछ कारण थे बेटा, जिसके कारण हमारे क्लासेस में लगभग इतना गैप हो गया. ठीक, चलिए. सो बिफोर गोइंग ऑन दीपावली वैकेशन, ठीक है, दीपावली वैकेशन पर जाने से पहले वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3 इन सिविक्स, दैट इज व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, है ना? दीपावली ब्रेक पर जाने से पहले हम लोगों ने सिविक्स में कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था? चैप्टर नंबर 3. व्हाट इज द टॉपिक? चैप्टर नंबर 3, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट. ओके, तो वो जो चैप्टर था वो हमने दीपावली ब्रेक पर जाने से पहले कंप्लीट कर लिया था. ठीक, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4. ओके, the name of the chapter is understanding laws. ठीक, सो जो लास्ट हमारा चैप्टर था, उस लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन किया था. ठीक, इफ यू रिमेंबर, इन लास्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. So one of the function that we discussed about the parliament was law making. Okay, parliament का जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने पार्लियामेंट के एक फंक्शन के बारे में पढ़ा था, एंड दैट फंक्शन इज व्हाट? लॉ मेकिंग. आप लोगों को यदि ध्यान हो, वो जो लॉ मेकिंग वाला फंक्शन है उसको
सफिशिएंटली उस चैप्टर में हमने डिस्कस नहीं किया था। उसका रीजन ये था कि वो जो लॉ मेकिंग फंक्शन है उसके ऊपर ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर 4 है। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज में किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाई द लॉज आर टू बी मेड, लॉ क्यों बनाए जाते हैं, लॉ किस प्रकार बनाए जाते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है, सो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, अब इसमें जो आज का टॉपिक है, द टॉपिक नाउ द सेम टॉपिक इज गिवन इन योर textbook also. Okay, so according to the textbook, the first topic that we are going to discuss is, do law apply to all? Okay, तो पहला टॉपिक हम लोगों को अभी डिस्कस करेंगे वो कौन सा है? Do laws apply to all? अब do law apply to all मतलब क्या कानून सभी लोगों के लिए एक समान रूप से एप्लीकेबल है? ओके, क्या लॉ सभी लोगों के लिए एक समान रूप से एप्लीकेबल है? गॉट इट? ओके, अभी when we are saying do laws apply to all, तो हमें ये जो पैराग्राफ दिया है, in this paragraph we have a discussion on 3 different situations. Okay, so अभी इस टॉपिक में हमें 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बारे में लॉ एप्लीकेबिलिटी की कंडीशंस डिस्कस करी है ना? तो डू लॉज अप्लाई टू ऑल मतलब क्या कानून सभी के लिए बराबर है? तो इस चीज को जज करने के लिए हमें 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बारे में हमारे इस सिलेबस में या पैराग्राफ्स में दिया है। ठीक है, तो डू लॉज अप्लाई टू ऑल, तो फर्स्ट कंडीशन वी आर चेकिंग और कंसीडरिंग इज फॉर एंशिएंट इंडिया। ठीक है, सो डू लॉज अप्लाई टू ऑल। अब डू लॉज अप्लाई टू ऑल मतलब क्या कानून सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है? डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या कानून सभी के लिए समान है? तो इस क्वेश्चन को हम 3 अलग अलग टाइम पीरियड्स के बेस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो जो सेकंड पैराग्राफ में हमें दिया है दैट इज व्हाट इट इज अबाउट एंशिएंट इंडिया। तो हम एंशिएंट इंडिया की कंडीशन देखेंगे कि पुराने समय में भारत में क्या लॉ सभी को इक्वली एप्लीकेबल थे? ठीक है, सो इन एंशिएंट इंडिया देयर were many laws. Okay, in ancient India there were many laws and rules to govern the society. Okay, there were many laws and rules to govern the society. ठीक, एंशिएंट इंडिया मतलब हिंदुस्तान में पुराने जमाने में गवर्न द सोसाइटी यानी समाज का कामकाज चलाने के लिए बहुत सारे लॉज थे और रूल्स थे। ठीक है, these laws and rules
may have some differences from one region to another. Okay, so these laws and rules, okay, these laws and rules may have some differences from one region to another. अब इसका मतलब क्या है? ये जो लॉज थे या रूल्स थे, है ना, जो एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, हम किस समय की बात कर रहे हैं? एंशियंट इंडिया। So ancient India में these laws and rules may have some differences from one region to another. ठीक, so ancient India में ये जो कानून थे, ठीक, अलग अलग रीजन में यानी कंट्री के अलग अलग इलाकों में ये कानून कैसे थे? अलग अलग थे। What does it means? That in one region the law may be different, the rule may be different. Okay, if you go to another region, the rule and law may change. The rule or laws may change. Got it? So the laws and rules have some differences from one region to another. Okay. The applicability of laws, the applicability of laws are different. The applicability of laws are different for different castes, for different caste and sections. Okay, अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी? What was the problem? ये एंशिएंट इंडिया था, पुराने समय में, पुराने जमाने में, है ना, there were many laws and rules to govern the society. ठीक, समाज पर शासन करने के लिए सोसाइटी का कामकाज चलता रहे, उसके लिए बहुत सारे लॉज थे, रूल्स थे। These laws and rules may have some differences from one region to another. एक रीजन से दूसरे रीजन में ये कानून अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल थे। ठीक, the applicability of laws are different for different castes and sections. सबसे बड़ी समस्या पुराने समय में क्या थी? वो क्या थी? The applicability of laws. अब applicability of laws मतलब कानून का पालन डिफरेंट होता था फॉर डिफरेंट कास्ट एंड सेक्शन, यानी अलग अलग जातियों के लिए वो जो कानून था वो एक समान रूप से एप्लीकेबल नहीं होता था। सेम लॉ इज देयर, सेम कंडीशन इज देयर, ठीक है, कानून वही होता था, रूल वही होता था, बट इट चेंज डिपेंडिंग अपॉन द कास्ट एंड सेक्शन, यानी वही कानून किसी एक कास्ट और एक सेक्शन के लिए अलग होता था और उसी कंडीशन में कानून दूसरे कास्ट और सेक्शन के लिए अलग होता था। ओके, सो लॉ वाज द सेम, लॉ वाज द सेम, बट एप्लीकेबिलिटी वाज डिफरेंट। ओके, कानून वही होता था, सेम होता था, परंतु एप्लीकेबिलिटी कैसी होती थी? डिफरेंट होती थी। ओके, एंड हाउ इट डिफरेंशिएटेड, that is for
same crime or same crime. Okay, the lower caste people for the same crime, the lower caste people, the lower caste get more punishment than the upper caste. Okay, that is what the difference. The applicability of laws are different for different caste and section. कानून का जो पालन है वो कैसा था, अलग अलग होता था. अलग अलग कैसे कि फॉर सेम क्राइम द लोअर कास्ट गेट मोर पनिशमेंट देन द अपर कास्ट. अपराध सेम है ना, क्राइम सेम है, परंतु लोअर कास्ट पीपल will get more punishment than the upper caste. Okay, yes Sandhya, this only happened in ancient India. ठीक है, जो पुराना हमारा भारत था ब्रिटिशर्स के आने के पहले, ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो पुराना हिंदुस्तान था, उस पुराने हिंदुस्तान में लॉ की कंडीशंस कुछ इस प्रकार थी. दैट इज व्हाट, फॉर सेम क्राइम द लोअर कास्ट गेट मोर पनिशमेंट देन द अपर कास्ट. ओके, जो लोअर कास्ट पीपल थे नॉर्मली उनको क्या ज्यादा पनिशमेंट मिलता था. किसके कंपैरिजन में, with comparison to the upper caste people. ठीक है, सो अलग अलग कास्ट, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए लॉ की जो एप्लीकेबिलिटी थी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ मतलब कानून का पालन. तो कानून के पालन करने की जो सिचुएशन थी वो अलग अलग कास्ट के कंपैरिजन में कैसी थी, अलग अलग थी, डिफरेंट थी. समझ में आया? और ये जो सिचुएशन थी एंशिएंट इंडिया की, है ना, ये हजारों सालों से चली आ रही थी. ठीक, समटाइम्स सम चेंजेस वेर देयर और इट डिपेंड ऑन द किंग और द रूलर. ठीक है, वो कंडीशंस जो थी, सिचुएशंस जो थी, उसमें कितना चेंज होगा, अच्छा आएगा या बुरा आएगा, वो सब किस पर डिपेंड करता था, रूलर्स पर डिपेंड करता था. ओके, मींस ओनली डिपेंडेंट अपॉन कास्ट एंड रिलीजन. सर्टेनली बेटा, है ना, जो कास्ट थी, तो जो अपर कास्ट थी, अपर कास्ट आर गेटिंग लेस कैटेगरी पनिशमेंट. ठीक है, और जो लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट को क्या मिलेगा, कठोर सजा मिलेगी. अपर कास्ट व्यक्ति हैं, पंडित जी हैं, ठाकुर साहब हैं, सेठ जी हैं, तो उनको क्या होगा, उनका प्रभाव ज्यादा है समाज पर. पनिशमेंट देने वाले जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं की कास्ट या सोसाइटी के हैं, तो दे गेट द लेस पनिशमेंट. ठीक, नाउ दिस इज व्हाट द कंडीशन ऑफ एंशिएंट इंडिया. ठीक है, अब ये जो एंशिएंट इंडिया की सिचुएशंस थी, ओके, ये धीरे धीरे क्या होना शुरू हुई, चेंज होना शुरू हुई. क्या होना शुरू हुई, चेंज होना शुरू हुई. ड्यूरिंग विच पीरियड, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ड्यूरिंग colonial period. Now, what is the meaning of colonial period? Colonial period is what? The time period when British came into India and established their rule. ठीक है, तो colonial period मतलब वो समय जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए और उन्होंने अपना राज स्थापित करना शुरू किया. Got it? So the condition of ancient India
The condition of ancient India changed. The condition of ancient India changed during colonial period. Okay. The condition of ancient India changed during colonial period. Okay, so जो law applicability का situation था कि the laws are different for different caste and section, है ना, अलग अलग जातियों के लिए लॉ की एप्लीकेबिलिटी कैसी थी, डिफरेंट थी. तो दैट कंडीशन ऑफ एंशिएंट इंडिया चेंज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में उस सिचुएशन में क्या होना शुरू हुए, चेंजेस होना शुरू हुए. ओके, now the laws are more equal. Now the laws are more equally applied than earlier. Though upper caste still have some advantage. Okay, so now the laws are more equally applied than earlier. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, sir, after when British came, they only made the Supreme Court and equal laws. Beta Sandhya, just let me complete this, then I will come to your question. Okay, so now the laws are more equally applied than earlier. यानी ब्रिटिशर्स के आने के बाद में उन्होंने इंडिया में जो लॉ सिस्टम था, कानून का जो सिस्टम था, उसमें धीरे धीरे क्या करना शुरू किए, चेंजेस करना शुरू किए. और सबसे ज्यादा ध्यान ब्रिटिशर्स ने क्या रखा कि लॉज आर मोर इक्वली अप्लाइड देन अर्लियर. पहले की तुलना में, एंशिएंट इंडिया के कंपैरिजन में, अब ब्रिटिश टाइम पीरियड में कानून जो थे वो लोगों के लिए एक समान रूप से एप्लीकेबल किए गए. तो पहले के कंपैरिजन में इक्वालिटी ज्यादा आई, बट स्टिल द अपर कास्ट स्टिल हैव सम एडवांटेज. तो ब्रिटिशर्स ने ये कोशिश की कि लॉ जो है वो इक्वली एप्लीकेबल हो. ब्रिटिशर्स ने ये प्रयास किया कि लॉ कैसे हो, इक्वली एप्लीकेबल हो. गॉट इट. परंतु फिर भी अपर कास्ट स्टिल हैव सम एडवांटेज. अपर कास्ट को अभी भी बहुत एडवांटेजेस अवेलेबल थे. ओके, सो नाउ द लॉज आर मोर इक्वली अप्लाइड देन अर्लियर. Though the upper caste still have some advantages. अभी भी अपर कास्ट लोगों के पास क्या थे, एडवांटेजेस अवेलेबल थे. गॉट इट. The British have established a uniform judicial system
The British have established a uniform judicial system in India. Okay, the British have established a uniform judicial system in India. Britishers ने क्या किया? They have established a uniform judicial system in India. हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, जैसे हमने एंशिएंट इंडिया के केस में पढ़ा था ना कि इन डिफरेंट रीजन्स लॉज और रूल्स हैव डिफरेंसेस। अलग अलग इलाकों में लॉज और रूल्स कैसे थे? डिफरेंट थे। सेम कंडीशन में हैदराबाद स्टेट में लॉ अलग होगा, राजस्थान में लॉ अलग होगा, ग्वालियर में लॉ अलग होगा। बट व्हाट द ब्रिटिश डिड, they have established a uniform judicial system in India. इंडिया में उन्होंने क्या किया? एक समान न्याय व्यवस्था या जुडिशियल सिस्टम एस्टैब्लिश किया। ओके, so the British have established a uniform judicial system in India. ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म, एक समान रूप से काम करने वाला जुडिशियल सिस्टम एस्टैब्लिश किया। ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान में एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम एस्टैब्लिश किया। इन दैट जुडिशियल सिस्टम सेम लॉ इन होल कंट्री। करेक्ट संध्या? ओके, दैट इज कानून जो भी बनाया वो पूरे हिंदुस्तान के लिए कैसा होगा? सेम होगा। ओके, द British made only those laws. The British made only those laws which favors European population. ओके, परंतु यूनिफॉर्म सिस्टम, यूनिफॉर्म लॉज या यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम तो एस्टेब्लिश किया, तो कुछ ना कुछ अच्छा किया ब्रिटिशर्स ने। ओके, ब्रिटिशर्स ने लॉ मेकिंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ अच्छा किया, परंतु जो भी अच्छा किया उसमें उन्होंने किसका फायदा देखा? अपना फायदा देखा। ठीक है, ने काम तो किया, एंशिएंट इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम था उसको चेंज किया। ठीक है, दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट दे हैव एस्टैब्लिश्ड, दे अपॉइंटेड द जजेस। ठीक, सब कुछ बहुत कुछ अच्छा किया, पर अच्छा किसके हिसाब से किया? व्हिच फेवर्स देम। ओके, तो द ब्रिटिश मेड ओनली दोज लॉज, the British made only those laws which favors the European population. Britishers ने only और only ऐसे लॉ बनाए जो किसको फेवर करते थे? which favors European population. जिसने किसको फेवर किया? यूरोपियन पॉपुलेशन। बेटा, जुडिशियल सिस्टम का मतलब होता है न्याय व्यवस्था। जुडिशियल सिस्टम मतलब न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था का मतलब कानून की अदालतें। ठीक है, तो जो अदालत लगाई जाती है, कोर्ट लगाई जाती है ना, और उसका पूरा एक सिस्टम एस्टैब्लिश किया कि दिस इज द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज द हाई कोर्ट, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, द जजेस आर टू बी अपॉइंटेड, जजेस आर सपोज्ड टू बी give the decision in these cases according to the law based on evidences and proof. Okay,
वो सब क्या कहलाता है? न्याय व्यवस्था या कानून की अदालत है। दैट इज व्हाट द जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? जुडिशियल सिस्टम कहेंगे। ओके, सो द ब्रिटिश मेड ओनली दोज लॉज व्हिच फेवर्स द यूरोपियन पॉपुलेशन। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ वही लॉ बनाए जो किसको फेवर करते थे? यूरोपियन पॉपुलेशन को फेवर करते थे। ठीक है, द इंडियन nationalist, the Indian nationalist lawyers and activists. Okay, the Indian nationalist lawyers and activists also play an important role. They also play an important role in the development of okay, so the Indian nationalists, lawyers and activists also played an important role in the development of judicial system, and law making during colonial period. Okay, so the Indian nationalists, lawyers and activists also played an important role in the development of judicial system and law making during the colonial period. तो वो जो कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा जुडिशियल सिस्टम बनाया है, लॉ मेकिंग प्रोसेस बनाई है ना, परंतु जो भी लॉज ब्रिटिश टाइम पीरियड में इवॉल्व हुए, डेवलप हुए, ओके, इट वाज नॉट अ सिंगल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा द इंडियन नेशनलिस्ट मतलब भारत के जो लोग हैं वो लॉयर्स और एक्टिविस्ट जो इंडियन लोग थे और कानून की पढ़ाई कर रहे थे, भारतीय हैं, परंतु दे आल्सो बिकम द एडवोकेट, ओके, एंड एक्टिविस्ट जो समाज सुधारक थे। तो द इंडियन नेशनलिस्ट मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, लॉयर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, they also play an important role in the development of judicial system. So जो कॉलोनियल पीरियड में जुडिशियल सिस्टम डेवलप हुआ उसमें सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं था, इंडियन आल्सो हैव अ गुड कंट्रीब्यूशन, दे आल्सो गेव लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम एंड लॉ मेकिंग। तो एंशिएंट इंडिया का हमने केस देखा टुडे एंड देन वी डिस्कस द केस ऑफ कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, फॉर विच कंडीशन डू लॉ अप्लाई टू ऑल? क्या कानून सभी के लिए एक समान है? तो ये चीज हमने दो टाइम पीरियड के लिए डिस्कस करी। वन वी डिस्कस अबाउट द एंशिएंट पीरियड एंड सेकंड वी डिस्कस अबाउट कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, टुमारो विल डिस्कस द कंडीशन ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। आज हिंदुस्तान में, तो आज हिंदुस्तान में मीन्स विल बेसिकली डिस्कस दिस एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ओके, अब हम जो कल जब डिस्कस करेंगे तो कौन से टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे? इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, एंड विल कंटिन्यू दिस
chapter. Okay, so that's all for today's class, friends. Thank you. Goodbye. Okay, and we'll now continue our classes, है ना? जस्ट मेरा क्वारंटाइन पीरियड ओवर हो चुका था सैटरडे को, ठीक है बेटा? और अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, so I am able to come to school on regular basis. So be ready for the classes every day, okay, at 10:15 a.m. Thank you, friends.